So hey guys, so in this video we are going to cover the article 19 onwards. So in the previous video what we have done, article 12, article 13 and then article 14 to article 18 that were constituted as a part of right to equality. Now we'll see the right to freedom. Okay, so there are six protected freedoms under article 19 of the constitutions. So we have seen that the fundamental rights are available to all the citizens of India without any discriminations. Therefore, it upholds the framework of liberty and equality. And these rights are the foundation of the Indian democracy, safeguarding the citizens from the state overreach, preventing the establishment of the authoritarian rule. So let's first see the right to freedom, that is Article 19, which has six subclause, that is six protected freedom. So one is freedom of speech and expression, another is assembly, another is association, and then movement, residence, and profession. Right? So let's see each in detail. So Article 19 subclause 1 has the freedom of speech and expression. Now how you can propagate the views, that is Article 19 says that you can propagate your views either through any means like pictures or direct through the speech. You have a freedom of press, then commercial advertisement, and you also have the freedom and protection against the telephone tapping. It includes your right to telecast, right to know about the government activities, that is right to information, and also you have the freedom of the silence, so that you should know. Then there are certain reasonable restrictions on it. Okay, state can impose the reasonable restrictions on the grounds of sovereignty and integrity of the India, right, security of the state, then friendly relations with the foreign states. आपको पता ही है जैसे मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने इंडिया के अगेंस्ट में एक टिप्पणी की थी और उसके कारण फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो गए थे. Right, so you have the reasonable restriction over your speech on the grounds of friendly relations with the foreign states. In public order, okay, decency and morality, right, you cannot just use abusive language against the woman or anyone else, so ये moral grounds है, right. So contempt of the court, okay, then defamation, that is MP और MLA के against में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना ताकि उनका defamation हो. Incitement to an offense, right, like hate speeches and all, so you do not have that freedom. So judicial interpretations, Supreme Court has ruled that this right includes protection against the bandh, okay, called by the political parties, okay, obviously, and even against the pre censorship on the newspaper. तो वो तो हमने कर दिया freedom of press वाला. This right includes the right to demonstration but not the right to the strike. Strike करने का अधिकार नहीं है आपको, लॉकआउट डिक्लेयर करने का अधिकार नहीं है. हाँ, पीसफुल पर्पज से आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो. राइट, नाउ विल सी द आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 and 3, that is assembly and association. So every citizen has a right to assemble peacefully and without arms, that is protest कर सकते हो peacefully without arms और public land पे ही, not on the private land. ओके, दैट इज मीटिंग हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या प्रोसेशन हो गया. और इस पे रेस्ट्रिक्शंस आप लगा पाएंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर. सो सोवेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो. सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज भारत न्याय संहिता, ओके, सो अलाउज द मैजिस्ट्रेट टू रेस्ट्रिक्ट द असेंबलीज दैट रिस्क obstruction or any danger. Now we'll see the freedom of associations. Okay, so citizen can form associations or union or cooperative society. Now what it means कि like this means political parties form करने का अधिकार, companies या partnership firms, कोई club या कोई trade union. Okay, Supreme Court ने बोला that trade unions have no guaranteed right to strike or declare a lockout. Okay, so see ये freedom of association जो है ये बनाने का अधिकार है, but the right to obtain the recognition of an association is not a fundamental right. This you should note it down. Okay, now we'll see the freedom of movement and residence. Okay, so you have the right to freely move from one place to another place throughout the territory of India. You have that right. Okay, freely movement का.
ओके, सो मूवमेंट यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बट फॉर टेम्पररी पीरियड, उसको आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का मतलब कि यू हैव द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसाइड एंड सेटल वाला पार्ट अगर आप परमानेंट पीरियड के लिए जहां रिसाइड कर रहे हो वो भी आपके पास है। रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली लगा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, और प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल कल्चर। ओके, नाउ व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज इट प्रमोट्स द नेशनल फीलिंग। ओके, सो दिस इज वेरी ओवर द सेपरेटिज्म, राइट। अभी देखो मूवमेंट जो है ना, ये टू टाइप्स है, एक तो इंटरनल विद इन द कंट्री हो गया, और एक एक्सटर्नल आउट ऑफ द कंट्री हो गया। ओके, सो जो इंटरनल मूवमेंट है ना, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, सो वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत गारंटीड है। बट जो एक्सटर्नल मूवमेंट है ना, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत गारंटीड है। और ओके, सो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द मूवमेंट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। सो पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, यहाँ पे आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। फिर दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रोसेस प्रोफेशन एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। सो यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or carry out any occupation or trade or business, you have that right, right? So qualifications कौन से हैं? So state can prescribe प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिविल इंजीनियर है तो उसको अगर घर कंस्ट्रक्ट करना है तो वहां पे टेक्निकलिटीज, जैसे सिविल इंजीनियर को ही स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करना हो, तो ये वाले जो क्राइटेरियाज हैं ये स्टेट लगा सकती है। सो स्टेट कैन प्रिस्क्राइब दोज क्वालिफिकेशंस, राइट। रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे लाइक आप लिकर का धंधा नहीं कर सकते गुजरात में क्योंकि बैन है। ओके, सो दैट रेस्ट्रिक्शंस कैन आल्सो बी देयर। सो कौन सा रेस्ट्रिक्शन है? एक तो क्वालिफिकेशन, जैसे सिविल इंजीनियर हो गए तो ही स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाओगे वो। एंड सेकंड इज द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। स्टेट खुद की मोनोपोली भी कर सकती है, दे कैन कैरी आउट एनी ट्रेड और बिजनेस इवन एज अ मोनोपोली, राइट। So this you should note it down. This right does not include the immoral or dangerous professions, right? State can prohibit the trafficking on the human beings, harmful drugs consumptions, explosives. Okay, so these activities can be regulated through the licensings. The right covers all the legitimate means of earning a livelihood. So these were the sample questions based on the Article 19. So you just pause the video and do it by yourself, right? So right now we'll do the Article 20, that is protection against the conviction for the offense. So जो Article 20 है, it protects the accused person. Okay, so यहाँ पे तीन provisions दिए गए हैं accused person को protect करने के लिए. Now which are the three provisions? So one is no ex post facto law. इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो और लॉ के अंतर्गत उस पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंस की सजा है 10 साल, और वो कन्विक्ट होते होते मान लो आपको 1 2 साल 3 साल का टाइम पीरियड चला गया कोर्ट के द्वारा, तब लॉ चेंज होके मान लो उसी क्रिमिनल ऑफेंस की सजा इंक्रीज करके 20 साल हो गई, तो आपको सजा 20 साल नहीं मिलेगी, 10 ही साल मिलेगी, राइट। सो दिस इज द टर्म दैट ये आप बोला जाता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। Okay, that is no conviction under the retrospective criminal laws. This is very important. तो जिस टाइम पे आप ऑफेंस कर रहे हो उसी वक्त जो लॉ होगा उस लॉ के अकॉर्डिंगली ही आपको सजा सुनाई जाएगी। एंड दिस प्रोटेक्शन अप्लाइज ओनली टू द, यू कैन से, क्रिमिनल लॉस, नॉट सिविल और टैक्स लॉ। इसका मतलब कि सिविल ऑफेंस, टैक्स ऑफेंस रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हैं, बट क्रिमिनल ऑफेंस रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, फॉरेनर्स एंड लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज, राइट। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब एक ही ऑफेंस के लिए आप 2 बार प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते, so no prosecution twice for the same offense. And third one is that no self incrimination. It means no person can be compelled to be a witness against himself or herself. तो खुद के लिए विटनेस फोर्सफुली आपको नहीं खड़ा किया जाएगा। एंड दिस एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, बट नॉट फिजिकल एविडेंस, जैसे आपका ब्लड, डीएनए सैंपल,
या फिर थंब इम्प्रेशंस, फिंगरप्रिंट्स, ये दे विल टेक इट फॉर वेरिफिकेशंस, but not oral witness or documentary witness. So this is very important. So now this is the most important right, that is protection of life and personal liberty. ये आर्टिकल 21 में है, that is no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by the law. राइट. सो गोपालन केस में क्या बोला था कि जो ये एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, तो नैरो इंटरप्रिटेशन लिया गया, बोला कि आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट है ओनली अगेंस्ट द आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन. इसका मतलब कि लेजिस्लेटिव एक्शन, पार्लियामेंट कोई लॉ पास करके आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकती है. फिर मेनका गांधी केस आया, वहां पे इसका इंटरप्रिटेशन एक्सपांड कर दिया गया और बोला कि आपकी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट द आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन ऑल्सो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो राइट टू लाइफ था, नाउ इट इंक्लूड्स अ ह्यूज एनॉर्मस नंबर ऑफ द राइट्स, दैट इज लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट. एजुकेशन का राइट आप नीचे दिए गए हैं, सी. सो लाइक हेल्थ, एजुकेशन, राइट. देन यू कैन से shelter, everything has been covered. So it has been expanded to include numerous rights that are very essential for the dignified life. जैसे राइट टू लाइवलीहुड हो गया, प्राइवेसी हो गया, शेल्टर हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, फ्री लीगल एड, स्पीडी ट्रायल एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट. तो सभी राइट्स आपके ये कवर हो जा रहे हैं. ओके. इवन कस्टोडियल हेरेसमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, right to sleep also, right to privacy, right to freedom from the noise pollution, air pollution, everything. तो ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, राइट टू प्राइवेसी कौन से अंतर्गत आता है, राइट. That was also asked, a legislation which confers executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary matter power in the application of law violates which of the following articles of the Constitution of India? This was asked. Just comment your answer in the comment section. Then Article 21A, that is right to education. Okay, so 21A article है right to education. So ये कहाँ से लाया था? इसको ऐड किया गया था 86 Constitutional Amendment Act 2002 से, right? And you have the fundamental right, that is free and compulsory education for the ages 6 to 14, right? And इसको implement करने के लिए RTE Act 2009 को लाया गया था in 2009. Okay, so before amendment, before 86 Constitutional Amendment Act, एजुकेशन जो था वो डीपीएसपी में था, और डीपीएसपी हमने किया कि नॉन जस्टिसेबल नेचर है, राइट. दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स. अमेंडमेंट ने क्या किया, एक तो आर्टिकल 21A लाया ताकि आपका ये फंडामेंटल राइट बन जाए 6 to 14 के लिए, और आर्टिकल 45 का फोकस कर दिया चेंज, उसको बोला गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस करना है अंडर 6 years. ओके, एक नई फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, राइट. सो 1993 में सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अ फंडामेंटल राइट फॉर प्राइमरी एजुकेशन विद इन द आर्टिकल 21, holding that every citizen has a right to free education until the age of 40. So this is very important. Now we'll do the article 22, that is protection against the arrest and detention. Okay, so अगर आप अरेस्ट हो रहे हो तो you have the right to be informed of the ground of arrest, right? So ground of the arrest should be informed. You have the right to be consulted and defended by the lawyer, obviously. Then timely presentation भी करना चाहिए before the magistrate within the 24 hours. 24 घंटे में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है. एंड दिस एक्सक्लूड द टाइम ऑफ द ट्रैवलिंग, तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग इसके अंतर्गत काउंट नहीं होगा. And you should be released after the 24 hours unless further detention is authorized, right. So आर्टिकल 22 है ना, वो डिस्टिंग्विश करता है दो टाइप के डिटेंशन को, एक आपका प्यूनिटिव और एक आपका प्रिवेंटिव. सो प्यूनिटिव यानी पनिशमेंट कर रहा है आपको, बट आफ्टर ट्रायल, आपका ट्रायल हो गया, कन्विक्शन हो गया, उसके बाद पनिशमेंट, वो प्यूनिटिव. प्रिवेंटिव यानी प्रिकॉशनरी मेजर विदाउट ट्रायल. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now these safeguards are available only
for ordinary arrest and does not apply to the enemy aliens. Enemy aliens यानी वो citizens उस कंट्री के जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ है, जैसे चाइना और पाकिस्तान, तो उनके सिटीजन्स को हम एनिमी एलियंस काउंट करते हैं. और दोज विच आर डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये जो सेफ गार्ड्स है ना, दे आर अवेलेबल ओनली टू दोज दैट आर इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट डिटेन अंडर द प्राइवेट प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट. Now the Supreme Court has clarified that these protections do not cover the civil arrest. So जो civil offense के लोग होते हैं, civil arrest किया जाता है जिनको, उनको और deportation of the aliens में ये safeguards available नहीं है. So this is very important. इसको ध्यान से आप एक बार पढ़ लेना. Now we'll see the preventive detention. Preventive detention यानी without trial, right? So India is unique among the democratic countries of the world, which has made the preventive detention a constitutional feature, right? For preventive detention exceeding the 3 months, अगर 3 मंथ से ज्यादा करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा जिनमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे और दे मस्ट अप्रूव इट. एंड डिटेनीज मस्ट बी informed of the ground for detention and given the opportunity to make their representation, right? अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है ग्राउंड, तो वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, तो वो चलेगा. ओके, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ लॉ बनाना है, लेजिस्लेटिव पावर रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज बोथ टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. अगर फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉस बनाने हैं तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती. और बाकी जनरल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर या एजेंशियल सर्विस के लॉ बनाने हैं तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक द लॉस, राइट. So we have covered till article 22. In the next session we will cover article 23 to 30. So thank you for watching. So if you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon button and share it as much as possible.